the most neglected part of our society are actually the orphans, and I wanted to do something for them. We don't have safe water to drink. We are just so problem focused that we are giving less time to think of solutions. Everything we do in Pakistan is just short term. जो हमारी इज्तिमाई मफादात है हम उनके लिए काम ही नहीं करना चाहते. हम अपनी यूथ को ये बताते ही नहीं है कि आपका सोसाइटी के अंदर रोल क्या है, आपने क्या किरदार अदा करना है. अगर हम अपनी यूथ को ये बताएंगे कि आपके क्या रोल्स हैं तो हमें यहीं से लीडर्स मिलेंगे. हमारे जो से पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको हमें इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा इस सेंस में कि वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन और पॉपुलैरिटी के लिए कोई भी सब्सिडी दे के इलेक्शन के वक्त हमें बिरयानी का लालच ना दे दें. क्या गुर्बत सिर्फ निचले तबके का असासा है? क्या सारी मुल्की खामियों के जिम्मेदार सिर्फ महज यही लोग हैं? वो अफसर जो सरकारी गाड़ी में बैठकर सारे फायदे लेते हुए भी अपना फर्ज अदा ना करे, वो है गुर्बत की वजह. वो उस्ताद जो सरकार से तनख्वाह वसूल करने के बावजूद भी तालीम ना दे, वो है गुर्बत की वजह. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so now we are entering the closing sessions of the conference and there are good announcements to be made. Actually, जैसा वीसी साहब ने पहले ही कहा था कि आप लोग ही हमारे VIPs हैं. So this is actually a message to all the youth of Pakistan that we are really counting on you and we trust in you and inshallah whatever we can help you with उसके हवाले से भी we are available. तो इसी context में keeping the tradition, the Pakistan Society of Development Economists collaborated with World Bank in terms of calling for the leaders which can actually submit their work related to a theme of dreamers and thinkers. And the specific theme in which they submitted their work was the leaders and you demanding a change. ये widely circulate हुआ था. 100 से ज़्यादा हमारे पास entries आई थी from all across Pakistan. And we did a very rigorous kind of a review. और उस review के बाद we had personalized interviews with them. And today we are going to finally reveal their names, who are the winners of that competition basically. इसके अलावा हमने कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन के लिए कुछ ट्रैवल ग्रांट्स भी प्रोवाइड की थी. वो लोग भी आज हमारे साथ ऑल अक्रॉस पंजाब अवेलेबल हैं. उनमें से भी कुछ लोगों को हम इनवाइट करेंगे टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. सो इट्स माय प्लेजर टू अनाउंस दैट वी हैव गॉट 6 फाइनलिस्ट्स आउट ऑफ दैट competition and I would like to request them to please come on stage with me and also present their work very briefly just to give them some highlight कि आप लोगों की क्या contribution थी. तो सबसे पहले if I can ask मशहूद उर्फी to please come over on the stage. महरीन खालिद, सवेरा हयात, सैयदा आयशा हुसैन, तलहा खालिद एंड शाहराज फातिमा. इस सारे प्रोसेस में हमारे लाहौर ऑफिस के कोलीग यासिर ने बहुत एफर्ट की. एक्चुअली ही लेड द प्रोसेस. ही इज़ अ रिसर्च फेलो एट PIDE and we are really proud of him because of the efforts which he has made. आगे तो these are basically the few of our future leaders which we have selected, but these are not the only ones. It was a small competition. और ये लोग अभी briefly they are going to present their theme on which they have submitted their work, just to highlight कि how they can actually prove to be worthy to take this nation to the next ladder of development. ठीक है, तो we can start off with maybe you, or you please come here and then just speak out what you contributed. Assalamu alaikum. So my name is Sayyida Aisha Hussain and I am from Rahman Medical College of Peshawar. So before starting, let me clarify one thing. When I came to this conference, I was perceived as a representative of Peshawar or Pashtuns, which is true. But standing right here on this stage, I would want to clarify that right now I'm just one of the youth in Pakistan and representing their voice, irrelevant of ethnicity or where I belong to or culture or anything.
So the theme for this was Leaders in You. What a fascinating title, I thought at that point. So we had to write about the challenges we see around us, what we have contributed to the society, and at the end, what we would like our leaders, what we would want to ask our leaders to do. So first of all, if any of us look around us, would find many things we'd want to change or we can contribute to change even. So when someone asks this question from me, this one incident comes into my mind that I did. We planned this iftar evening with the orphans in our city. So let me give you a background. So every year, the student of our college, what they do is they organize this iftar for the poor in front of the major hospitals of Peshawar. So, but at that time, what I thought was that the most neglected part of our society are actually the orphans, and I wanted to do something for them. So that led me to organize a iftar dinner for them, and we brought some gifts for them as well. Now, some of you might be thinking, what good did that do, and did that made any change or something like that? And these were exactly the thoughts that were running in my mind as well. But I went ahead with it thinking a little act of kindness would go far. And it went in a sense that it created awareness in my community, and then after that, it started a chain of reaction of kindness in at least my community. So if we can do these kind of things locally, I suppose that would promote and that would go way farther than federalizing or doing it on government level, which is beneficial, but it's not working out. So let's just try doing it individually at this point. So if we talk about challenges, I'm sure everyone knows there are many challenges, but even the developed country have their own challenges. But what we have right now are actually survival problems. Like we don't have safe water to drink. When I went to Karachi, a friend of mine got hepatitis A, and the Karachi people were like, "Welcome to Karachi." And I was like, okay. And that leads to a belief that, okay, if everyone's going to be in flight and fight mode all of the time, when are we going to start thinking of solutions? And what I have observed in this conference as well is we have this habit of exaggerating our problems. They are big, they are there, but we are just so problem focused that we are giving less time to think of solutions. The problems are there, but let's also try thinking of solutions as well. And I suppose I'm taking a lot of time. So to sum it up, let's just, okay, there's this one incident that happened in the morning. Sir Ashraf, I met him, Ashfaq, yeah. Sorry. I met him in the corridor, and when I was discussing this with him, I told him that we are going to be telling them that what we want to ask our leaders. And he was like, "Who are your leaders? They are not even educated." And that's like, you know those things, but when it comes from a credible source, it comes as a shock. So what I want to request right now is that there are many intellectual people that I saw in this conference, and there are many of them sitting in our front rows as well. So how about you guys start training the young minds? So because everything we do in Pakistan is just short term. We don't have any plans, and every plan is just short term. This aid we have been discussing these past 3 days, it's just a short-term solution. So let's start thinking about our long-term plans as well. Because long-term, and looking at the long-term, your long-term is like your future, and your future is your youth at this time. And if you train them right, if you train them, if their mindset is of the correct path, then I suppose that can lead you way further than these short-term plans. And that I'd say take a very long, but at least it would be a sustainable progress. Thank you so much.
Thank you so much, Aisha. I must announce that she is from medical background. She is doing MBBS and she had a lot of interest in economics. So I think that should be something we should be honoring. So, and she came all the way from Peshawar alone. So that's an achievement for her also. Our second winner I would announce is Miss Mehreen Khalid. She is from School of Economics, PZU. And Miss Mehreen Khalid, please. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महरीन खालिद है और मैं स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से हूँ। BS इकनॉमिक्स एंड फाइनेंस जो है वो मेरा सब्जेक्ट है। तो मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था ऐसे लिखने का और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस ऐसे सबमिशन से लेकर इंटरव्यू तक और आज तक जिस तरह से पाइड की टीम ने जो है वो इनकरेज किया, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था। स्पेशली जो हमारी जो वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स के साथ जो एक मीटिंग थी, उसने जो है वो वर्ल्ड व्यू चेंज करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। तो जो मेरा ऐसे था वो उसका टॉपिक था चेंज, तब्दीली। तो उसके जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो सिर्फ मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो तब्दीली के लफ्ज़ से हम सभी वाकिफ़ हैं और हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में, हमारे मुल्क के अंदर तब्दीली आ जाए। लेकिन हम सबका मसला ये है कि हम समझते हैं कि कोई बाहर का एलिमेंट आएगा, कोई बाहर का फैक्टर आएगा जो हमारे मुल्क में तब्दीली लेकर आएगा। हम खुद से जो है वो कुछ नहीं करना चाहते। और दूसरा जो एक हमारे साथ मसला है, हमारे साथ शायद कोई साजिश हुई है कि हमें मादियत परस्ती में इतना ज़्यादा लगा दिया गया कि हम जो है वो जो हमारी इज्तमाई मफादात हैं हम उनके लिए काम ही नहीं करना चाहते। हम अपनी यूथ को ये बताते ही नहीं है कि आपका सोसाइटी के अंदर रोल क्या है, आपने क्या किरदार अदा करना है। आप सब यहाँ बैठे हैं, कभी बचपन में आपको किसी टीचर ने बताया कि आपने सोसाइटी के अंदर क्या रोल अदा करना है, या किसी किस्म का हमें गाइड ही नहीं किया जाता। हमें तब पता चलता है जब हम 30 to 40 की एज में आते हैं, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा टाइम गुजर चुका होता है कि हम उस वक्त कुछ नहीं कर रहे होते। तो मेरी ये जो है एक ऐसे के अंदर ये मैंने मेंशन किया था कि हमें अपनी यूथ को ये गाइड करने की ज़रूरत है कि आपने अपनी सोसाइटी के अंदर क्या किरदार जो है वो अदा करना है। और अगर हम अपनी यूथ को ये बताएंगे कि आपके क्या रोल्स हैं, तो हमें यहीं से लीडर्स मिलेंगे। हम पूरी कॉन्फ्रेंस के अंदर ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, हमारी जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज़ बनाती है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करती, क्योंकि हमारी जो हम सिर्फ अपने लिए काम करते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी यही कर रही है। तो अगर हम अपनी यूथ को गाइड करेंगे तो हमें यहीं से जो है वो लीडर्स मिलेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। Thank you, Ms. Mehreen Khalid. Our third winner from the youth competition is Ms. Savera Hayat. Ms. Savera Hayat, please present your essay. Assalamu alaikum everyone. Since I'm comfortable here, so I'm gonna talk to you here. So firstly, I really want to thank PIDE, all the team of the PIDE who made this young economist essays very, sorry. So thank you so much for giving us this opportunity to be a part of this prestigious conference, and we are looking forward to be more get into these more insightful discussions like these. So my essay was actually about transitioning political leadership from redundancy to responsibility. So there are a few points which I want to share with you guys. So the first one was that abolishing redundant ministries, in which we can see that streamlining the government by eliminating unnecessary ministries can leads to cost saving and better allocation to resources. The second most important point was embracing market principles. Adopting market-based approaches can promote efficiency and innovations in governments. The third one was that collaboration and decentralization. Leaders should prioritize collaboration with stakeholders and empower local authorities. The next important point was accessibility and leading example. Political leaders should be accessible to the public, actively engaging with citizens and demonstrating ethical behavior to inspire trust and accountability. The next one is long-term solutions. Since we all focus on the short-term solutions and not on the long-term measures, which we all are actually discussing about right now. So the most important thing is, instead of short-term fixes, leaders should focus on implementing sustainable policies and initiatives to address the root causes of societal challenges. And the most important in my eyes is technocracy.
which is not that much common in our eyes. So incorporating technocratic expertise can bring evidence-based decision making, just like in British and all the developed countries. So thank you so much. That was from my side. Thank you. Thank you so much, Miss Savera Hayat. I would like to announce a fourth winner is Mr. Talha Khalid. Assalamu alaikum everyone. My name is Talha Khalid. I am a student of International Relations from University of Central Punjab, Lahore. मेरा बैकग्राउंड साउथ पंजाब से ही है, मैं बुरवाला से बिलोंग करता हूँ. अगर कुछ ब्रीफ समरी दूँ अपने ऐसे की, मेरा ऐसे तो था पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर कि इकोनॉमिक इनइक्विटी को ख़त्म कैसे करें. जॉन से हमने कॉन्फ्रेंस में बातें की हैं अभी, काफ़ी टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे काफ़ी अच्छी लिटरेचर रिव्यू और काफ़ी अच्छी बातें की हैं. सम ऑफ मेरे पॉइंट्स यही थे कि रिफॉर्म्स अब वो वक्त पर है पाकिस्तान के, हम कभी भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, सारों ने बताया. रिफॉर्म्स अभी चाहिए, उसके अलावा हमें अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने पड़ेंगे. सबसे मेन बात यह है कि हमें पॉलिसी फोकस करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस. और लास्ट पॉइंट मेरा ये था कि लास्ट 2 पॉइंट्स कि हमें जो से हमारे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं उनको प्राइवेटाइजेशन की बजाय प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ बनाना चाहिए, क्योंकि वो सोशल इक्वालिटी में बड़ा रोल प्ले करते हैं. और एक लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे जो से पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको हमें इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा अलहदा करना पड़ेगा, इस सेंस में कि वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन और पॉपुलैरिटी के लिए कोई भी सब्सिडी दे के इलेक्शन के वक्त हमें बिरयानी का लालच ना दे दें. उसके अलावा अगर मैं यूथ के ऊपर फोकस करूं बात, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ताड़ी दोनों हाथ से बजती है, एक से नहीं. पॉलिटिकल लीडर्स को हम कहते रहते हैं लेकिन ख़ुद भी चेंज हों, और काफ़ी थोड़ा सा दिलेर भी हों, क्वेश्चन करें और कुछ इस तरह का करें कि यहाँ पर साउथ पंजाब से हमें उनको कोटा ना देना पड़े बल्कि वो खुद आए. ठीक है. And that is all from my side. Thank you for this forum from World Bank, PIDE and every of our sponsor. Thank you. Thank you, Mr. Talha Khalid. Our fifth winner from the youth competition is Miss Shehraj Fatma. Miss Shehraj Fatma, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. मेरी तकरीर का टॉपिक है पॉवर्टी, गुर्बत. तो मैं उसी के बारे में अपनी तकरीर शुरू करूँगी. वो जिसका एक ही बच्चा हो भूखा 8 पहरों से, बताओ अहले दानिश वो तख्ती ले या गंदुम. सो गए बच्चे गरीब के जल्दी ये सुनकर, फरिश्ते आते हैं ख्वाबों में रोटियां लेकर. सदर ज़ीवकार इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसका ख्वाब एक आज़ाद मुल्क के तौर पर देखा गया था, वो आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं. वजह हमारी मौशी पसमानदगी है. वो मौशी पसमानदगी कि जिसकी बदौलत आज हर नौजवान मुल्क छोड़ने का ख्वाब देखता है. वो मौशी पसमानदगी कि जिसकी बदौलत हर मुहिब्बे वतन वापस आने को आहें भरता है मगर आ नहीं पाता. वो मौशी पसमानदगी कि जिसने असदहे की तरह निगल लिया है हमारी इखलाकियात को, हमारे वकार को और हमारी हैसियत को. हमारी लातमन्नाई ज़रूरियात और नाकाफ़ी वसाइल की जंग ने अगर किसी को ख्वार और रुस्वा किया है, अगर किसी को खुदकुशी करने पर मजबूर किया है, अगर किसी को अपने वकार पर समझौता करने को मजबूर किया है, तो वो गरीब तबका है. वो जो 2 वक्त की रोटी की तंगो-दो में जब नाकाम रहता है तो आंसू नहीं रोक पाता, जिंदा रहने की उम्मीद नहीं रख पाता. दूसरी तरफ हमारा एलीट तबका है जो इनवाए इकसाम के ताम से लुत्फानंदोज होकर करोड़ों के महलात में रहते हुए भी ये तबसरा फरमाते हैं कि पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं. क्या गुर्बत सिर्फ निचले तबके का असासा है? क्या सारी मुल्की खामियों के जिम्मेदार सिर्फ महज यही लोग हैं? कब हम ईमानदारी से, जुर्रत से इस बात का मुहासबा करेंगे? कब हम सच बोलेंगे? ये जो सिस्टम जगह जगह करप्शन के अड्डे बनाकर बैठा है, ये है असल गुर्बत की वजह. वो लीडर जो अपनी जेबें भरने पर इक्तफा करे, वो है गुर्बत की वजह. वो अफसर जो सरकारी गाड़ी में बैठकर सारे फायदे लेते हुए भी अपना फर्ज अदा ना करे, वो है गुर्बत की वजह. वो उस्ताद जो सरकार से तनख्वाह वसूल करने के बावजूद भी तालीम ना दे, वो है गुर्बत की वजह. हर वो शख्स जो शामिल है बददयानती में, झूठ में,
वो है गुर्बत की वजह। अहमद फराज फरमाते हैं कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। सो ये जवाब है मेरा मेरे अदू के लिए कि मुझको हिर्से करम है ना खौफे खमियाजा। उसे है सतवत शमशीर पर घमंड बहुत, उसे शकोहे कलम का नहीं है अंदाजा। मेरा कलम नहीं किरदार इस मुहाफिज का जो अपने शहर को महसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी गदागर का जो गासिबों को कसीदों से सरफराज करे। मेरा कलम नहीं औजार उस नकब जन का जो अपने घर की ही छत में शगाफ डालता है। मेरा कलम नहीं मिजान ऐसे आदिल की जो अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखता है। मेरा कलम तो अमानत मेरे लोगों की है। मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है। मेरा इसीलिए तो जो लिखा तपाके जान से लिखा, जभी तो लोच कमा का जुबान तीर की है। मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगा न जाएगा। हुक्मरानों पर मलबा डालकर खुद बरिस जमा करार देकर मीठी नींद सोने वालों, ये याद रखो कि रियाया को वैसा ही हुक्मरान मिलता है जैसे कि वो खुद हो। चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। यूं ही नहीं होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। शुक्रिया। Thank you so much, Shiraj. Our final winner was Mr. Mashood Urfi. He actually ended up in the top 1 position, but unfortunately, he's not in Multan. He had to leave due to some unavoidable reasons. So here are our 5 winners, and Mashood Urfi is the 6th one. So back to you. Now I would like to request our leader in PIDE, Dr. Nayab, to please grace us, and let's give these kids some certificate of appreciation as well as the prize money. But besides that, let me again remind ourselves that we also invited few participants from Punjab ताकि वो आएं और हमारे इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें। खालिद, प्राइज मनी कितनी है? अभी मुझे खुद भी नहीं पता। आपको पता है? Maybe it's a lottery. आपको पता है? It was in thousands. Like how many thousands? It was 50,000 for each winner. और उससे पहले कि मैं इनको envelopes दूँ, 4 girls and 2 boys among the top 6. So this shows the credibility of the judgment. ये चलें जी। जो हमारे DLIs हैं, would you like to see जिन्होंने travel किया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको पहले देना ले। अच्छा, whatever. हाँ, ठीक। इनको पहले देना। यार उनको अब अमाउंट बता के उनके लिफाफे को देना। इन बच्चों ने जो अपने जज हैं उनके लिए भी एक छोटा सा सॉवेनियर था, तो पहले इनको दे लेते हैं। पहले इनको दे लेते हैं ताकि जो हमारे जज साहब हैं उनके हाथ खाली हो जाए। First of all, Miss Mehreen Khalid. Miss Mehreen Khalid, please come forward. Thank you. Miss Savera Hayat. Miss Savera Hayat, please come forward. Miss Sayyida Aisha Hussain. Miss Sayyida Aisha Hussain, please come forward. Mr. Talha Khalid. Mr. Talha Khalid, please come forward. And Miss Shehraj Fatma. ओके जी, अभी खालिद ने कहा कि 20 स्टूडेंट्स फ्रॉम पंजाब हमने स्पॉन्सर किए ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। वो खड़े हो सकते हैं?
आप में से कोई यहाँ आके अपना एक्सपीरियंस बताना चाहेगा? दो बच्चे आ जाए आ जाए। आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हारिस अता है। मेरा बैकग्राउंड जो है वो बलूचिस्तान से है। तो टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने सिर्फ 2 बंदे, एक मेल और एक फ़ीमेल सेलेक्ट किए हैं ताकि वो इनके बिहाफ पे, हम सब के बिहाफ पे बोल सकें। तो मैं अपना थोड़ा सा शॉर्ट सा एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैं पैदा हुआ था खुजदार में। तो मैंने BLA, मैंने इंसर्जेंसी, मैंने टेररिज्म, सारी चीज़ें देखी हुई है, नेशनलिज्म, हर चीज़ देखी हुई है। तो एज अ यूथ मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है तो मैं आके यही बोलूँगा, नेशनैलिटीज़ छोड़ दें, एथनिसिटी छोड़ दें, हर चीज़ छोड़ दें। मौके की बात करते हैं हम लोग कहते हैं कि भाई हमें यहाँ पे मौका नहीं मिलता, साउथ पंजाब का कार्ड चला देते हैं, बलूचिस्तान का कार्ड चला देते हैं कि भाई हम बहुत पसमानदा इलाके से रह रहे हैं। मैं वहाँ से पढ़ के आया हूँ, मेरे वालिद ने 30 साल बलूचिस्तान में नौकरी की है, मेरे वालिद ने वहीं पे मेहनत करके, और अभी वो रिटायर होके मेरे पास, अब मेरी ही पढ़ाई के लिए वो यहाँ बलूचिस्तान से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए आपका कि आपको पढ़ाई नहीं मिल रही है, आपको कॉन्फ्रेंस का पता नहीं था, हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। तो बजाय कि आप ये साउथ पंजाब कार्ड, ये बलूचिस्तान कार्ड, इस तरह के कार्ड चलाएं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें बस। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum. My name is Jameen Afzal and I am final year student of Visionaries Political Science. हमें जब यूनिवर्सिटी में बताया गया, मतलब हमें इस तरह से नहीं था, जस्ट कुछ स्टूडेंट्स थे जिनकी सिलेक्शन हुई कि आपको इस तरह से एक कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर जाना है। तो बेसिकली ज़्यादातर इशू यही था कि मतलब कि ये दूसरे सिटी में है, क्या करेंगे। लेकिन मतलब इस कॉन्फ्रेंस में हमें फिर जब मेरा और मेरी फ्रेंड इकरा, हम एक ही डिपार्टमेंट से हैं, और बाकी सारी फीमेल जितनी भी मेरी यहाँ पे फेलोज़ हैं, हम सबको हमारे पेरेंट्स की तरफ से सपोर्ट मिली। और दूसरा हमें पता चला कि यहाँ हमें अकोमोडेशन भी मिलेगी और इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस हमें मिलेगा। तो मतलब इसकी वजह से हमें काफ़ी सपोर्ट मिली। हमारे पेरेंट्स ने कहा कि आप जाएँ ज़रूर, इसको अटेंड करें। और हम सब अपनी मतलब फील्ड में जिस तरह भी हमारा इंटरेस्ट था उस हिसाब से हमने आके इसको अटेंड किया। और इट हैज़ बीन अ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे कि रेवेन्यू जनरेशन या क्या पॉलिसी की क्या प्रायोरिटीज़ होती हैं, ये सब चीज़ें पहले हमें इसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जितनी हमें यहाँ पे आके पता चली। और दूसरा जब हम यहाँ पे आए तो हमें जो बुक्स वगैरह का हमें पता चला, सर की हमने स्पेशली बुक्स ली हैं जिसमें हमें लगा कि हमारा मतलब काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और दूसरा सर का जो एक वो स्टाइल है वो हम काफ़ी हमें इंस्पायर किया। तो थैंक यू सो मच स्पॉन्सर्स का भी, और स्पेशली पाइड का, इन्होंने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum. I'm Farhan Amjad from Government College University Faisalabad. I'm doing MPhil in Sociology. First of all, I'm sorry, हमने आपको बताया कि 2 बंदे हम में से आपसे बात करेंगे, तो मैं तीसरा आ गया बिना बताए। तो first of all, I want to thank PIDE, PSDE and all the sponsors from my side and my colleague Bedar Bakht Khan and from the whole Government College University Faisalabad that you gave us this golden opportunity. तो being very honest, मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ आने से पहले जिस दिन मुझे मेल रिसीव हुआ उससे पहले तक मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में कोई PSDE नाम की सोसाइटी भी है। तो दिस इज़ लेवल ऑफ अवेयरनेस इन आवर सोसाइटी। सो इधर आने के बाद अब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो अवेयरनेस है वो को थोड़ा सा बढ़ाया जाए ताकि जो यूथ है उस तक प्लेटफॉर्म्स पहुँचे, उनको पता चले। आई हैव ऑब्जर्व दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन आवर यूथ एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। डॉक्टर नदीम, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये बच्चों ने आके कहा है कि वो आपके साथ एक तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं, तो अगर आप स्टेज पे आ जाएं प्लीज़।